अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मन नाफ़िआ व अमलन सालिहन मुतक़ब्बला. In the previous class, we have completed the first four sentences, the dialogues. We have completed the first four dialogues. गुज़िश्ता घंटे में हम लोग शुरू के चार जुमलों के बारे में बात कर चुके थे. फिर से एक बार दोहराता हूं, तर्जमा गौर से देखते जाइए. I'll translate the previous sentences once again. Just pay attention to the sentences. The conversation starts with Sa'id. Sa'id says, "अकिताबु मुहम्मदिन हादा या यासिरु." सईद से शुरू होती है. सईद ने कहा, अकिताबु मुहम्मदिन हादा या यासिरु. इज दिस द बुक ऑफ मुहम्मद ओ यासिर. ए यासिर, क्या ये मुहम्मद की किताब है? यासिर रिप्लाइज, ला हादा किताबु हामिदिन. नो, दिस इज हामिद्स बुक. नहीं, ये हामिद की किताब है. Then Sa'id says, Aina kitabu Muhammadin? Where is the book of Muhammad? मुहम्मद की किताब कहाँ है? यासिर ने जवाब दिया, हुआ अलल मक्तबी हुनाका. हुआ अलल मक्तबी हुनाका. It is on the table there. It is on the table there. वो वहां मेज पर है. वो वहां मेज पर है. So this was what we discussed yesterday. यहाँ तक बात हुई थी. Any doubt till here? कोई सवाल यहाँ तक? Is it clear till here? वाضح? No doubt. Fine. Clear. Alhamdulillah. We'll move forward then. If it is clear, we'll move forward. अगर वाज़ेह है तो इंशाल्लाह आगे बढ़ते हैं. So the next dialogue, Sa'id says, أين دفتر عمار? أين دفتر عمار? Where is दफ्तर? नोटबुक. दफ्तर मीन्स नोटबुक. दफ्तर का माना है कापी. दफ्तर का माना है कापी, नोटबुक. दफ्तर, कापी. दफ्तर मीन्स नोटबुक. वेयर इज द नोटबुक ऑफ अम्मार? वेयर इज द नोटबुक ऑफ अम्मार? अम्मार की कापी कहाँ है? अम्मार की कापी कहाँ है? यासिर सेस, हुआ अला मक्तबिल मुदर्रिसी. हुआ अला मक्तबिल मुदर्रिसी. It is on the table of the teacher. It is on the teacher's table. Okay, here you have to pay attention to the words. Daftaru Ammarin. Daftaru is mudaf, Ammarin mudaf ilayh. Mudaf is neither having alif lam nor tanween. Mudaf ilayh is ending with kasra. मुदाफ पर ना अलिफ लाम है ना तनवीन, और मुदाफ इलेह के आखिर को कसरा देंगे. तो इस चीज पर तवज्जो देते हुए चलिए. दफ्तर मुदाफ, अम्मारिन मुदाफ इलेह. दफ्तर मुदाफ, अम्मारिन मुदाफ इलेह. Similarly, in the next sentence, Yasir says, हुआ अला मक्तबिल मुदर्रिसी. हुआ अला मक्तबिल मुदर्रिसी. It is on the teacher's table. It is on the table of the teacher. वो उस्ताद के मेज पर है. वो उस्ताद के मेज पर है. It is on the teacher's table. It is on the teacher's table. वो उस्ताद के मेज पर है. वो उस्ताद के मेज पर है. Okay, you have to see here one thing. Ala maktabil mudarrisi. Ala, this harfe jar, it is giving kasra for the word maktab, the word after it. And maktab is mudaf, neither having alif lam nor tanween. Al mudarrisi mudaf ilayhi ending with kasra. यहाँ गौर से देखने की चीजें बहुत कुछ हैं. अला हरफ जर है,
अपने बाद वाले को कसरा देता है, इसलिए मकतबी कसरा के साथ पढ़ रहे हैं। मकतब मुदाफ है, इसलिए इस पर ना अलिफ लाम है ना तनवीन है। इसके बाद आने वाला लफ्ज मुदाफ इलैहि कसरा से खत्म हो रहा है। अला हरफ जर गिविंग कसरा टू द इसम आफ्टर इट। मकतब, it is having kasra and it is mudaf, so it neither has alif lam nor tanween. al mudarris mudaf इलैहि ending with kasra। अला हरफ जर अपने बाद वाले को कसरा देता है, इसलिए मकतबी को कसरा है। मकतबी मुदाफ है, इसलिए इस पर ना अलिफ लाम है ना तनवीन। अल मुदर्रिसी मुदाफ इलैहि है, इसलिए इसके आखिर में कसरा है। ओके। इट इज ऑन द टीचर्स टेबल। वो उस्ताद के मेज पर है। वो उस्ताद के मेज पर है। द नेक्स्ट वन वी हैव सईद। सईद्स कॉन्वर्जेशन, सईद्स डायलॉग। सईद ने कहा, सईद ने क्या कहा, देखिए। कलमु मन हाजा या अलियु। कलमु मन हाजा या अलियु। So here we have a little discussion, we have a little explanation related to this combination कलमुमन। अब यहाँ थोड़ा सा तवज्जो देने की जरूरत है कलमुमन पर। कलमुमन पर थोड़ा सा तवज्जो देने की जरूरत है। You have to pay attention to this combination कलमुमन। कलमुमन। So the word qalamu, it's neither having alif lam nor tanween. So this is mudaf. Clearly we can understand that qalamu is mudaf. qalamu पर ना अलिफ लाम है ना तनवीन है, तो qalamu मुदाफ है, इसमें कोई इश्काल नहीं। qalamu is mudaf because it is neither having alif lam nor tanween. Okay, no problem with this. It's very clear. But the word after it, man, it's mudaf ilay, but not having kasra. Mudaf ilay should get kasra, but man is not having kasra. So what is the reason? कलमु तो मुदाफ है, शुरू में ना अलिफ लाम है ना तनवीन है आखिर में, तो ये मुदाफ, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन कलमु के बाद जो लफ्ज आता है मन, इसको कसरा देना था मुदाफ इलैहि होने की वजह से। मुदाफ के बाद मुदाफ इलैहि लाते हैं, और मुदाफ इलैहि को कसरा मिलना है, मन को कसरा मिलना है। लेकिन कसरा क्यों नहीं मिल रहा, वजह क्या है? तो यहाँ देखिए, लफ्ज जो मन है, इसको मबनी बोलते हैं, इसको मबनी बोलते हैं। So the word man, it is from the stable words. It is from the stable words और मबनी words। मन जो है, ये मबनी कलिमात में से है, मबनी कलिमात में से है। मबनी कलिमात क्या है? मबनी कलिमात ऐसे कुछ कलिमात हैं जो हमेशा ऐसे ही रहेंगे, तब्दीली नहीं होगी उसके अंदर। कसरा, ज़म्मा, फतहा, बदलने का कुछ नहीं है। जैसा है वैसे ही, जैसा है वैसे ही है, उसके अंदर कोई भी किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं आती है। मन है तो मन ही, उसकी अगर आप शुरू में लाए, दरमियान में लाए, आखिर में लाए, हर जगह वो मन ही होगा। मन को बदलने, मन कभी भी नहीं बदलेगा। मन हमेशा मन ही रहेगा, उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी। द वर्ड मन इज फ्रॉम द स्टेबल वर्ड्स, इट इज फ्रॉम द मबनी वर्ड्स। दिस मीन्स दैट द वर्ड मन, इट विल नॉट हैव एनी चेंज। इट विल नॉट हैव एनी चेंज whether it comes at the beginning of the sentence, it comes in the middle of the sentence, whether it comes after harf jar, whether it comes as a mudaf ilayh, in all the case the word man will remain the same. It will remain the same, it will not have any change in it. Man will remain the same. So such words are called mabni. Mabni words are the words which will not have any change in them. Wherever they might be in the sentence, they will have the same sign. No change, no change in the sign. मबनी अल्फाज कुछ ऐसे कलिमात हैं, चाहे वो शुरू में आ जाए, दरमियान में आ जाए, आखिर में आ जाए, कहीं भी आ जाए, वो हमेशा वैसे ही रहेंगे। उनके अंदर आप तब्दीली नहीं पैदा कर सकते हैं। अगर उसके आखिर में सुकून है तो हमेशा सुकून रहेगा, अगर आखिर में फतहा हो तो हमेशा फतहा होगा, यानी तब्दीली नहीं होगी, जैसा है वैसे ही रहेगा। तो इसलिए मन मुदाफिले होने के बावजूद उसके अंदर तब्दीली नहीं आई है, उसके आखिर को कसरा नहीं दिए हैं। The word man, although it is mudaf ilayh, but it is not having kasra because it is mabni. It is stable. It will not have any change. It will remain the constant. Okay, it will remain the same. That's why, although it is mudaf ilayh, instead of getting kasra, it is having the same sukoon. It will have the same sign. The last sign of man will remain the same.
no change in it. Okay. So that's why qalamu man, qalamu is mudaf, man is mudaf ilayh. qalamu mudaf hai, man mudaf ilayh hai. qalamu mudaf hai, man mudaf ilayh hai. So the meaning of man we have discussed earlier. Man means who. Man का माना है कौन. Man means who. Man का माना है कौन. So qalamu man, pen of who. Pen of who. कौन का कलम. कौन का कलम. Pen of who. Pen of who. So you can write it as whose pen. Instead of saying pen of who, you can say whose pen. कौन का कलम कहने के बजाय आप कह सकते हैं किसका कलम. कलम उमन, किसका कलम. कौन का कलम के बजाय किसका कलम कह लीजिए. कलम उमन, whose pen. Instead of saying pen of who, you can say whose pen. Whose pen. हादा, this. Whose pen is this. किसका कलम है ये. किसका कलम है ये. Whose pen is this. या अली, ओ अली. ऐ अली. Whose pen is this. ओ अली. किसका कलम है ये. ऐ अली. ऐ अली, ये किसका कलम है. ओ अली, whose pen is this. ओ अली, whose pen is this. Is it clear with this? Any question related to this? कोई सवाल, कोई इश्काल यहां तक. Clear, alhamdulillah. For the first one is the translation, is this Muhammad's book, O Yasir. Yes, is this Muhammad's book, O Yasir. Then this is teacher's pen, hada qalamul mudarrisi. Yes, clear, alhamdulillah, clear, fine. So the answer you can see, hada qalamul mudarrisi. This is the teacher's pen, or you can say this is pen of the teacher. ये उस्ताद का कलम है. अली ने कहा ये उस्ताद का कलम है. दिस इज पेन ऑफ द टीचर. दिस इज पेन ऑफ द टीचर. दिस इज द टीचर्स पेन. दिस इज द टीचर्स पेन. ओके. Are there more mabni word? Yes, but now we'll just remember this one. Okay. There are many lots of mabni words, but for now just remember man. Man is from the mabni words. All the questioning words are mabni words. Man, ma, aina. Okay. So all these are mabni words. जितने भी सवाली अल्फाज हम लोग पढ़ चुके हैं, मन, माजा, मता, मन, माजा, आईना, ये सब के सब मबनी है. और बहुत सारे हैं, उसको आगे देखेंगे इंशाल्लाह. ठीक है. There are many more mabni words, we'll see later on इंशाल्लाह. सवाल कलम से क्यों हो रहा है, सीधे मन से क्यों नहीं. Types is also mabni. Types, I didn't get this. Types. सवाल, this is a teacher's pen. This is teacher's pen. This is teacher's pen. ये उस्ताद का कलम है. This is the teacher's pen. This is the teacher's pen. ये उस्ताद का कलम है. What is harf nida? I'll explain later on. Just have some patience. सवाल कलम से क्यों हो रहा है, सीधे मन से क्यों नहीं है. इसलिए कि यहाँ सवाल मुदाफ बनाकर सवाल है. किसका बताना है. आदमी कौन है ये मकसद नहीं है. कलम किसका है ये पूछना मकसद है. When we say qalam man, here the question is not about the person. It's about the owner of that pen. It's not about directly. It's not about a person. You are not directly asking about a person. You are asking who is the owner of this pen. Who is the one who is responsible for this pen. Whose pen is this? Okay. So we are asking with respect to the possession, not directly about a person. किसी आदमी के बारे में सीधा हम लोग सवाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम लोग आदमी यानी कलम के माध्यम से, कलम कलम के जरिए से हम लोग पूछ रहे हैं कि कलम से ताल्लुक रखने वाला आदमी कौन है. कलम से ताल्लुक रखने वाला आदमी कौन है, ये कौन सा आदमी है. Types is also mabni. I didn't get this one. Those, what is the meaning of types? What do you want to say with the help of types? What is mabni words? I just joined. Then you can go through the recordings. Okay, I cannot repeat because it will
आई विल हैव टू वेस्ट द टाइम ऑफ अदर्स, दूसरों के वक्त को जाया करना पड़ेगा, इसलिए जो है आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए, अगर ताखिर से ज्वाइन होते हैं रिकॉर्डिंग सुन लीजिए ताकि दूसरों का वक्त जाया ना हो। इफ यू हैव ज्वाइन लेट, go through the recording so that you will not waste the time of the others. Okay, fine. Now these are the few things. If you have any question or doubt related to these things, you can ask me. यहाँ तक की चीजों के सिलसिले में कोई इश्काल हो, कोई सवाल हो तो सवाल कर सकते हैं। बारकल्लाहु फीकुम। देन बिफोर मूविंग फॉरवर्ड we'll see one exercise. आगे बढ़ने से पहले एक तमरीन देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक तमरीन देखते हैं। we'll see one exercise before moving forward. Okay. जस्ट सी द एट्थ एक्सरसाइज। आठवीं तमरीन देखिए, आठवीं तमरीन। जस्ट गो थ्रू द एट्थ एक्सरसाइज बिकॉज वी हैव सीन कलम मन हादा, ए सिमिलर एक्सरसाइज, एन एक्सरसाइज बेस्ड ऑन सिमिलर थिंग। विल सी दिस वन। आठवीं तमरीन देखिए। अभी हम लोग कलम उमन के बारे में पढ़े हैं, तो उसी से ताल्लुक रखने वाले, उसी से जुड़ा हुआ, उसी से जुड़ी हुई एक तमरीन है। गौर से देखिए। इक़रा अल मिसाल अल आतिया, रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल। आने वाली मिसाल पढ़िए। So see the example. We have the picture of a book and we have the question किताबु मन हादा। किताब की तस्वीर है और इस तस्वीर के बारे में सवाल हो रहा है किताबु मन हादा, किताबु मन हादा। So if you see the picture is related to the book. That's why we have the question kitabu man hada. Kitab means book. So related to the book, we have the question kitabu man hada. Okay. So the first part we have completed. Iqra al-mithal al-ati. Read the following example. आने वाली मिसाल पढ़िए। तो पढ़ चुके हैं. We have read the example. So what should we do after that? Summa kawwin as'ilatan mithlahu. Summa then. Summa फिर. Kawwin make. Kawwin बनाओ. Kawwin make. Kawwin बनाओ. Summa kawwin then make, फिर बनाओ। क्या बनाना है? असइलतन क्वेश्चंस। असइलतन सवालात क्वेश्चंस। असइलतन सवालात क्वेश्चंस। असइलतन क्वेश्चंस सवालात। सुम्मा कव्विन असइलतन then make questions मिथलहू similar to it। मिथलहू similar to it। मिथलहू उसी तरह। मिथलहू उसी तरह, similar to it। then make questions similar to it। then make questions similar to it। फिर बनाओ सवालात उसी तरह। फिर बनाओ सवालात उसी तरह, यानी उसी तरह सवालात बनाना है, जिस तरह ये सवाल बनाए हैं उसी तरह सवालात बनाना है। So just like we have a question here, we have to make question similar to this question। Questions similar to this question। मुशीरन इला सुवर तालियती। मुशीरन पॉइंटिंग। मुशीरन इशारा करते हुए। मुशीरन इशारा करते हुए। मुशीरन मीन्स पॉइंटिंग towards। pointing towards الصور التالية। التالية the following। التالية the following। الصور plural of الصورة which means pictures। الصور الصورة plural is الصور pictures। الصور pictures। الصور تصوير। الصور تصوير। مشيرا إلى الصور التالية pointing towards the following pictures। pointing towards the following pictures। आने वाली तस्वीरों की तरफ इशारा करते हुए। आने वाली तस्वीरों की तरफ इशारा करते हुए। pointing towards the following pictures। pointing towards the following pictures। So this is what you have to do। just I'll repeat okay। फिर से एक बार दोहराता हूं, गौर से देखिए।
Second line, do we write both shirt and house question together, or do we write? Just a minute. Just a minute. Read the following example, then make questions similar to it, pointing towards the following pictures. Read the following example, then make questions similar to it, pointing towards the following pictures. आने वाली मिसाल पढ़ो, फिर बनाओ कुछ सवालात, उसी तरह आने वाली तस्वीरों की तरफ इशारा करते हुए. So what you have to do is, just like pointing towards this book, we have Kitabu Manhada. Similarly, you have to make some questions pointing towards these pictures, towards these objects. यहाँ जो तस्वीर है, इस तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए किताबु मनहादा है. किताब की तस्वीर है तो किताबु मनहादा है. अब यहाँ कुछ और तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों की तरफ इशारा करते हुए भी सवालात बनाना है. जैसे कलम के बारे में है तो यहाँ वैसे ही लाना है. पहला लफ्ज कलम के बारे में, उसके बाद मन सवालिया लफ्ज लाएंगे, फिर इसमें इशारा लेकर आएंगे. सो यू हैव दिस पैटर्न, स्टार्टिंग विथ द starting with the name of the thing in the object, the thing in the picture. Okay, like here we have the book, so we have kitabu. So if you have the pen, you have to write accordingly the word in Arabic for the pen. Then you have to write man. Man will be the second word. Then you have isme ishara, the third word. Okay, just like kitabu manhada, you have to frame some questions. किताबु मनहादा ही की तरह हमारे पास कुछ सवालात बनाने पड़ेंगे. ठीक है. अच्छा, so here we have a question. This two pictures in a same line we have the picture of a shirt and the picture of uh, the house. So you can write it in two different lines. You can write it in two different lines. कमीज की तस्वीर भी है और घर की तस्वीर भी है, दोनों एक ही जगह है. तो चाहे तो आप दो अलग अलग लिख सकते हैं या मिलाकर भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है. लेकिन सवाल उसी तरह होना है, किताब मनहाजा ही की तरह होना है. You have to frame the question in the similar way, similar pattern. Kitabu manhada, the same pattern you have to follow. The same pattern you have to follow. You have to write the name of the word in the picture. Then you have to write questioning word man. Then you have to write इसमें इशारा. पहले आपको ये जो तस्वीर है, तस्वीर का नाम लिखेंगे, तस्वीर में जो लफ्ज है उसको जिक्र करेंगे, फिर उसके बाद सवालिया लफ्ज मन का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आप इसमें इशारा इस्तेमाल करेंगे. इसमें इशारा चाहे तो हादा लिखिए, चाहे तो जालिका लिखिए, मसला नहीं है. इसमें इशारा यू कैन चेंज इट. इफ यू वांट यू कैन राइट हादा, इफ यू वांट यू कैन राइट जालिका. ओके, यू कैन चेंज द इसमें इशारा अकॉर्डिंग टू व्हाट यू वांट. इफ यू वांट टू राइट हादा, यू कैन राइट हादा. इफ यू वांट जालिका, यू कैन राइट जालिका. हादा और जालिका इसमें इख्तियार है आपको. इसमें इशारा लाना है, चाहे आप हादा लाएं या जालिका लाएं, दोनों चलेगा. Okay, so the questions, we have some questions. For second line, do we write both shirt and house question together? You can write together, or if you want, you can write each in separate line, as you wish, according to your convenience. But the question must be correct. The question pattern should be correct. सवाल एक सही तरीके से आपको सवाल करना है, ये असल देखना है. मिलाकर लिखे, अलग अलग लिखे, मसला नहीं है. Okay. Both shirt and house was next to each other, so I was a little confused. No problem. Barakallahu feekum. Clear. Alhamdulillah. Jazakallah. Page number, please. This is in the page number 31. Page number 31. Eighth exercise will be for homework today. Okay. सफा नंबर 31 में 8वीं तमरीन ये होमवर्क है. पेज नंबर 31, exercise number 8. This is for homework. And we'll see some more homeworks. Okay. कुछ और भी होमवर्क देखते हैं. We'll see some more homeworks. सेवेंथ एक्सरसाइज, लेट्स सी द सेवेंथ एक्सरसाइज ऑल्सो. सातवीं तमरीन भी देखिए, सातवीं तमरीन भी आसान है. सेवेंथ एक्सरसाइज, बिकॉज समवन हैज आस्क्ड मी अबाउट हरफ निदा, यू कैन गो थ्रू द एक्सप्लेनेशन हियर. सातवीं तमरीन में हरफ निदा के बारे में वजाहत है, इसको देखिए गौर से. सो द वर्ड्स मुहम्मदुन, खालिदुन, उस्ताजुन, वलदुन. So before this, if you add harf nida, ya alif ya, which is harf nida. Harf nida is ya alif ya. Ya alif ya. This is called harf nida.
या अलिफ या जो है ना, इसको हम हरफे निदा कहते हैं, हरफे निदा। सो द वर्ड आफ्टर हरफे निदा इट विल नॉट हैव तनवीन। हरफे निदा के बाद जो भी इसम लेकर आते हैं उसको तनवीन नहीं देंगे, उसको आप तनवीन नहीं देंगे। द वर्ड आफ्टर हरफे निदा, यू शुड नॉट गिव तनवीन फॉर इट। यू शुड नॉट गिव तनवीन फॉर द वर्ड ऑफ कमिंग आफ्टर हरफे निदा। हरफे निदा के बाद आने वाले लफ्ज को आप तनवीन नहीं देंगे। हरफे निदा के बाद आने वाले लफ्ज को आप तनवीन नहीं देंगे। सो दिस इज द थिंग विच वी हैव रिलेटेड टू द हरफे निदा। हरफे निदा इज ए वर्ड विच वी यूज टू कॉल समवन। किसी को पुकारने के लिए, किसी को बुलाने के लिए हरफे निदा का इस्तेमाल करेंगे। इफ यू वांट टू कॉल समवन वी यूज द वर्ड हरफे निदा, लाइक या मुहम्मदू, ओ मुहम्मद। सो यू आर कॉलिंग मुहम्मद, मुहम्मद को पुकारना है तो या मुहम्मद कहेंगे आप। या मुहम्मद, ओ मुहम्मद, ए मुहम्मद। मुहम्मद को पुकारते वक्त आप कहेंगे या मुहम्मद, ए मुहम्मद, ओ मुहम्मद। या खालिदू, ओ खालिद, या खालिदू, ए खालिद। या उस्तादू, ओ उस्ताद, ओ टीचर, या उस्तादू, ए उस्ताद। या वलदू, ओ बॉय, ए लड़के, या वलदू, ओ बॉय, ए लड़के। ओके, सो द वर्ड आफ्टर हरफे निदा इट विल नॉट हैव तनवीन। हरफे निदा के बाद आने वाले लफ्ज को आप तनवीन नहीं देंगे। Okay, this is the thing which we learn in this exercise. Now, based upon this, we have the whole exercise. اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. Read and write along with giving signs to the ends of the words. Read and write along with giving signs to the ends of the words. कलिमात के आखिर को हरकत देने के साथ पढ़ो और लिखो। कलिमात के आखिर को हरकत देने के साथ पढ़ो और लिखो। सो हियर वी हैव सम ऑफ द वर्ड्स, यू हैव टू गिव साइंस टू देम। यहाँ कुछ कलिमात हैं, उन कलिमात को आप हरकत देते हुए लिखेंगे। यू हैव टू गिव द साइंस फॉर द लास्ट लेटर्स ऑफ दीज वर्ड्स। यहाँ जो कलिमात दिए गए हैं, इनके आखिरी आखिरी हरूफ को, इन कलिमात के आखिर को हरकत देते हुए लिखेंगे। कहाँ तनवीन देना है, कहाँ तनवीन नहीं देना है, सिर्फ गम्मा लिखना है। इस चीज पर तवज्जो देना जरूरी है। यू हैव टू पे अटेंशन टुवर्ड्स, you have to pay attention towards the words, the last letters of the words, where you have to give tanween and where not to give tanween. So if the word is coming after harf nida, you will not give tanween. In general, you can give tanween. अगर हरफ निदा के बाद यह आ जाए कोई लफ्ज, तो उसको आप तनवीन नहीं देंगे। हरफ निदा के बाद कोई लफ्ज आ जाए तो उसको आप तनवीन नहीं देंगे। हरफ निदा ना हो तो तनवीन देंगे। इफ देर इज नो हरफ निदा यू कैन गिव तनवीन, इफ देर इज हरफ निदा नो तनवीन। So this is what you have to do in the seventh exercise. Is it clear? What is the meaning of maktab, table, or office? Table. Table. maktab in उर्दू we say office. maktab उर्दू में ऑफिस के लिए इस्तेमाल होता है, अरबी में टेबल। क्लियर, अल्हम्दुलिल्लाह, फाइन। So seventh and eighth exercises are for homework, and also the first exercise I'll explain the first also. First, seventh and eighth, three are for homework. पहली तमरीन, सातवीं तमरीन और आठवीं तमरीन, ये तीनों होमवर्क है। पहली तमरीन में समझाता हूं इंशाल्लाह। द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑल्सो आई एक्सप्लेन। सो फर्स्ट एक्सरसाइज, सेवेंथ एक्सरसाइज, एट्थ एक्सरसाइज, दीज थ्री आर फॉर होमवर्क टुडे। पहली तमरीन, सातवीं तमरीन, आठवीं तमरीन, ये तीनों होमवर्क है आज के लिए। सो लेट्स सी द फर्स्ट एक्सरसाइज। अजिब अनिल अस्इलतिल आतियति, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, आने वाले सवालात के जवाब लिखिए। So here we have three questions. You have to answer the three questions in Arabic. तीन सवालात हैं, तीन सवालात के जवाबात आपको अरबी में लिखना है। तीन सवालात हैं, तीन सवालात के जवाबात आपको अरबी में लिखना है। You have to answer all the three questions in Arabic. You have to answer all the three questions in Arabic. Okay. So here you have to pay attention to one thing.
Give an example, please. We have only three. If I give one example, you will have only two left. सिर्फ तीन है, तीन में से मैं एक बता दूंगा तो सिर्फ दो रह जाएंगे आपके लिए। मिसाल तो देखिए, see here, just I'll explain it. Try yourself. If you don't understand, you can feel free to ask me through WhatsApp. Okay, you can ask me personally. You try yourself because I know that you have the capability. Once, if I start, if I start explaining all the things, if I start giving the answers, then you will lose your ability. Try yourself, strive. If you don't understand, you can ask me. I'm there for you, inshallah, at any time. But try first. First, you try from yourself. From your side, you have to try. Then we'll see if there is any mistake. I'll be there to correct you. पहले कोशिश कीजिए, आप मेहनत कीजिए, लिखने की कोशिश कीजिए। आपके अंदर वो काबिलियत है, ये तो मैं जानता हूँ। अगर आप नहीं कर सकते हैं या आपको जवाब देने में दिक्कत होती है तो आप मुझे पर्सनल पर मैसेज कीजिए। इंशाल्लाह मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। लेकिन आप पहले कोशिश कीजिए। कोशिश करने से पहले जवाब दूंगा तो मुश्किल है आपके लिए। ओके। Okay, just a minute. The entire conversation above the first example is first exercise is the example. Okay, inshallah, inshallah, zarur. Okay. Okay. So this one, Aina kitabu Muhammadin, Aina kitabu Ammarin, Aina haqibatul mudarrisi. So here the third one is a slightly different thing. When compared to first and second, the third is slightly different. पहली दूसरी के बिलमुकाबिल तीसरी में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है देखिए। हकीबतु, हकीबतु फेमिनाइन, हकीबतु मुअन्नस है, तो आप जवाब भी मुअन्नस में ही देंगे। जो जमीर इस्तेमाल करेंगे आप मुअन्नस ही इस्तेमाल करेंगे। इफ यू आर यूजिंग द जमीर फॉर आंसरिंग द थर्ड वन, you have to use a feminine zamir, whereas the first two kitabu is muzakkar, it is masculine. Okay, so you can use the masculine zamir, you can say huwa. But for the last one haqibatu, this is feminine, so you have to use hiya, you have to use hiya, the zamir hiya will be used. पहले दो में किताबु देखिए, पहले दो में किताबु, ये दोनों मुजक्कर हैं, तो मुजक्कर के लिए हुआ की जमीर इस्तेमाल करेंगे, मसला नहीं है। लेकिन आखिरी जो है हकीबतु, हकीबतु मुअन्नस है, इसलिए आप मुअन्नस जमीर इस्तेमाल करेंगे, मुअन्नस जमीर इस्तेमाल करेंगे। मुअन्नस जमीर यानी हिया का इस्तेमाल करते हुए आप जवाब देंगे। द थर्ड वन यू हैव टू आंसर यूजिंग द फेमिनाइन जमीर हिया। ओके, नाउ हियर वन थिंग, whenever we have the combination of mudaf and mudaf ilayh, mudaf is considered very important. That's why whatever we use the zamir, it should be according to the mudaf, it should be according to the mudaf. जब भी आप कहेंगे किताबु मुहम्मदिन, किताबु अम्मारिन, मुदाफ मुदाफ इलैह को लेकर आते हैं, तो यह मुदाफ की अहमियत है, मुदाफ ही असल है। किताबु मुहम्मदिन, मुहम्मद की किताब, तो आप यहाँ किताब के बारे में बात कर रहे हैं, किताब असल है ना, तो इसलिए मुदाफी को अहमियत है और मुदाफी का एतबार करते हुए आप सारी चीजें बदलेंगे। जमीर भी जो लाएंगे मुदाफ के एतबार से लाएंगे। Whenever we have mudaf and mudaf ilayh, mudaf is considered important. That's why whatever the changes you make, it depends upon mudaf. Mudaf is the most important thing. When you say kitabu Muhammadin, Muhammad's book, so you are speaking about the book. So accordingly, you have to make the changes because you are speaking about the book. You are speaking about the mudaf. So accordingly, the changes will be made. Okay. How to know a word is muannas? To know that a word is muannas, it will end with round ta. हकीबतु is मुअन्नस because it is ending with round ta. हकीबतु मुअन्नस है इसलिए कि इसके आखिर में मुअन्नस गोलता है। Okay, the words ending with round ta, remember that this is feminine, this is मुअन्नस। जिसके आखिर में भी गोलता आ जाए तो ये मुअन्नस है, जिसके आखिर में भी गोलता आ जाए वो मुअन्नस है। The word ending with round ta, it is मुअन्नस। Like we have साअतुन, as-साअतु, this is also feminine because it is ending with round ta. as-साअतु ये भी मुअन्नस है क्योंकि इसके आखिर में भी गोलता आकर है। So the word ending with round ta, it is feminine. And the next lesson is all about feminine. There we'll discuss in detail. अगला जो सबक है ये मुअन्नसी के बारे में है, वहां इंशाल्लाह तफसील से देखते हैं मुअन्नस कहाँ होगा, क्या होगा, कैसे होगा, वो सब इंशाल्लाह। अभी फिलहाल याद रखिए कि आखिर में गोलता आ जाए तो ये मुअन्नस है। If the word ends with round ta, then it is muannas. Just remember it for now. The detail we'll discuss it in the next lesson inshallah. Okay. Is it clear? Any doubt till here? वादह? So we have the last two dialogues.
द लास्ट टू डायलॉग्स विल कीप इट फॉर टुमारो। आखिरी दो जुमले रह गए हैं, इन दोनों को इंशाल्लाह कल मुकम्मल करते हैं। अभी फिलहाल कोई सवाल है तो सवाल कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन और डाउट नाउ यू कैन आस्क मी। द लास्ट टू डायलॉग्स विल कीप इट फॉर टुमारो। विल कंप्लीट द लेसन टुमारो एंड द रिमेनिंग एक्सरसाइजेस आई विल एक्सप्लेन इट टुमारो। बकिया जो तमारीन है इसको कल मुकम्मल करते हैं, और बकिया जो सबक है वो भी कल करते हैं। आज के लिए सिर्फ पहली तमरीन, सातवीं तमरीन, आठवीं तमरीन, ये तीनों होमवर्क है। फॉर टुडे फर्स्ट, सेवेंथ एंड एट्थ एक्सरसाइजेस आर फॉर होमवर्क। फर्स्ट, सेवेंथ एंड एट्थ एक्सरसाइजेस आर फॉर होमवर्क। ओके। बारकल्लाहु फीकुम, नफ़अल्लाहु बिकुम। Okay, one more thing, just a minute. So this is for today. One more thing which I would like to mention is the first exam will be till the end of this lesson. The first exam will be till the end of this lesson. पहला जो इम्तिहान होगा आप लोगों का, वो इंशाल्लाह इस सबक के आखिर तक होगा। इस सबक के आखिर तक 32, पेज नंबर 32 विल बी द लास्ट थिंग फॉर द एग्जाम। सफा नंबर 32, यहां तक आपका इम्तिहान होगा। ओके।